Okay. So I think we can start now. More people will join in as we go along, I'm sure. So first of all, thank you everyone for joining us. Today's session, as you know, is about skills, critical skills to develop as a B.Tech student. So there are some subtopics that we will be covering under the main topic, and some of them would be, what are the an overview of basically the skills that you should develop as a B.Tech student. What are the technical skills? What you can do outside of your academics to make you more, industry ready? And also some of the resources. What are the resources that you can use to be able to go forward with your learning journey? So for the same, I'm quite happy to welcome Ipsita Modi. She is currently a B.Tech student at KJ Sumaya Institute of Technology in Mumbai. Alongside her academic journey, she's also actively involved in community service. She's volunteering for organizations like Teach for India and Break Free. She's also serving as a joint organizational officer at the Institution of Engineering and Technology at her college. So, before we begin, just let me remind all of you that you can just post in your questions in the Q&A box. Um, we will take up the questions after we are done with the presentation, and whatever you have in your mind that you want to ask regarding the topic, please feel free to ask us. So, without any further delay, Ipshita, you can just start. Ipshita, Uh, you were on mute. Take it again. No. yeah, yeah. So first of all, I would like to thank Niharika ma'am and Shiksha webinars for giving me this opportunity to deliver this webinar. So I'll start with a quick introduction of myself. I am Ipsita Modi. I am currently pursuing B.Tech in Information Technology at KJ Somaya Institute of Technology, Sion, Mumbai. So since 8th, 9th standard, I had this curiosity in my mind to, analyze things and see कि, okay, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है. And this curiosity led me to take science in 11th, 12th, and eventually I joined engineering. So now you all might be thinking कि ये जो points है crucial skills for success required for B.Tech student, ये तो chat GPT या फिर Google पे भी मिल जाएंगे. So why this webinar? So yeah, I would like to say कि chat GPT मतलब just gives you theory, but as a human the quality of experience is only there within us, right? So today I'll not be talking only just theory, but I'll be talking with my experience, with the experience of my life. So, as it is said that engineers are better at everything except engineering. So, with this note, let's start with today's webinar on some skills required to make better engineers. So, just for a quick overview, this webinar is not only for B.Tech students, but for any student or any aspiring individual who is interested in tech field. Yeah. So the agenda for today's webinar would be technical skills, communication skills, critical thinking and problem solving skills, time management and goal setting, teamwork and collaboration skills, and the last, adaptability and flexibility. So let's start with technical skills. Now, B.Tech hai, engineering hai, so technical skills is the first priority in anyone's life, right? So the first point I would like to cover is core knowledge about the field and clear concepts. So now being a B.Tech student or any student, BSc, BCA or any tech aspiring student, you should first have core knowledge about the degree that you want to pursue or are currently pursuing. For example, if I am an IT student, right, I'm pursuing B.Tech in IT, so I should know that what is the kind of syllabus, what are the things I'm going to study in this field, and what are the career opportunities I might have in near future. So this is the basic thing before stepping up into any tech field of your choice. The second thing would be clear concepts. Of course, engineering requires clear concepts, the clearance of your concepts. So basically, the main concept starts from 10th, 11th, and 12th, and then first year, second year of B.Tech. So based on my experience, I would say that to me, first year was just an extension of 12th because I didn't saw anything new. From second year onwards, things started changing, but first year was just an extension. So it was like the things that I had studied in 11th and 12th were most useful for me in first year.
So you should have your concepts clear, be it physics, maths और chemistry का थोड़ा limited scope है because of course tech field है, but first year में chemistry of course रहता है. So वहां पर you should have your concepts clear, जो basic concepts रहते हैं अगर वो clear रहेंगे तो आगे जाके कोई भी चीज easy पड़ेगी, right? The second point is programming languages. Now, many of you might have क्वेश्चंस की प्रोग्रामिंग अगर सीखना भी है तो कौन से लैंग्वेज से चालू करे, पहले कैसे करे, क्या करे. सो बेसिकली यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह बहुत लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग चीजें बताएंगे. बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एज टू व्हाट आई लर्न, the first thing I learned is C++ along with HTML in 11th and 12th combined. So I did my C++ and HTML in 11th and 12th, and then in first year I learned C, which is related to C++ only. And then in second year, I learned Java, and then now I'll be learning Python. So this was my flow of learning programming languages, but it's entirely up to you. क्योंकि people say कि Python is the most easiest language, so उससे चालू करना चाहिए. But the thing is, Python में जो सिंटैक्स हो गए या कुछ फंक्शंस है वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब उसमें बेस है. तो अगर डायरेक्टली पाइथन किया ना तो वो कोई कोई लोग को समझ नहीं आता कि ये क्या चालू है. इससे अच्छा अगर मुझे पूछे तो जैसे मैंने पढ़ा C++ या सी, आई थिंक यू शुड गो फॉर सी और C++ as that is the most basic or fundamental language, and that will guide you to pursue further programming languages. HTML, जावास्क्रिप्ट या CSS जो है वो हैंड इन हैंड कर सकते हैं क्योंकि उसका जावा ही सबसे रिलेशन नहीं है, वो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो वो तुम कैसे भी ऑर्डर में जा सकते हो. पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द ऑर्डर. द नेक्स्ट थिंग इज मैथमेटिक्स. ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग है तो मैथ्स तो रहेगा ही, वो तो पीछा नहीं छोड़ेगा. तो मैथ्स के भी कंसेप्ट जो है, बी इट इंजीनियरिंग, नॉट ओनली फर्स्ट ईयर बट बी इट इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो, डेटा स्ट्रक्चर्स हो, हर इसमें मैथमेटिक्स है. हर इसमें मैथमेटिक्स डायरेक्टली नहीं रहेगा पर उसका इनडायरेक्टली यूज तो हर इसमें है. फॉर एग्जाम्पल इन programming mathematics are used in data structures to design algorithms, and matrices are used in memory management. तो mathematics तो आना ही है, उसका कोई solution नहीं है. Maths का basic three topics which I would suggest would be differentiation, integration and of course trigonometry. These three are the most basic and fundamental concepts of math जो तुमको आगे जाके हमेशा काम आएंगे इंजीनियरिंग में, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा, इसका बेसिक से अगर क्लियर है, बेसिक फॉर्मूलाज जो है, तो आगे जाके जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा. The next thing I would be suggesting are some few courses that you can do to learn programming languages or data structures, and first of all is NPTEL courses, of course. So NPTEL courses का funda is basically they are kind of affiliated to certain colleges, I think. तो एक बार वो check करना, but the website is NPTEL Swayam. So these websites में क्या होता है ना कि जो IITs या IISc या ट्रिपल IITs के जो प्रोफेसर रहते हैं वो खुद सेशंस, मतलब ऑन लाइव सेशन नहीं रहता पर रिकॉर्डेड सेशंस रहते. तो जो उनके प्रोफेसर्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स रहते हैं, वो लोग अपने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया या डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया या कोई भी चीज हो गई वो सिखाते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू टेक. ये एनपीटीएल पोर्टल पे तुम्हें और भी बाकी सारे कोर्सेज मिलेंगे. सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट. सर्टिफिकेशन चाहिए तो कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और एग्जाम देना पड़ता है, पर अगर जस्ट फॉर द सीखने का पर्पस चाहिए तो यू कैन रेफर एनपीटीएल कोर्सेज. सेकेंड इज ऑफकोर्स कोर्सेरा. एवरीवन नोज अबाउट कोर्सेरा. कोर्सेरा में थोड़े बहुत पेड कोर्सेज है, थोड़े बहुत अनपेड है, सो यू कैन रेफर टू दैट. The next is Codacy. Now this is the portal or the website that I have referred. So इसमें पेड होते हैं, मोस्टली तो पेड होते हैं, बट इट्स नॉट दैट कॉस्टली. मतलब I bought 10 to 11 courses in 300 to 400 rupees, which was quite affordable. तो सर्टिफिकेट के साथ वगैरह सब मिलता है, उसमें रोबोटिक्स था, फुल स्टैक डेवलपिंग वगैरह वगैरह वो सब रहता है. तो ये भी एक ऑप्शन है. और गूगल के भी कोर्सेज रहते हैं, यू कैन सर्च इट अप. वो गूगल का जो साइट है वो भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. सो यू कैन गो एंड सर्च इट अप. कोई कोई फ्री रहते हैं, कोई कोई मेरे ख्याल से कोर्सेरा के साथ टाई अप किया गूगल ने, तो यू कैन डू दैट टू. यूट्यूब चैनल्स, कोर्सेज तो हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए. तो प्रोग्रामिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कोड विथ हैरी, अपना कॉलेज और ब्रो कोड. दीज आर द थ्री मोस्ट फंडामेंटल यूट्यूब चैनल्स दैट आई यूज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. एंड अगर डीबीएमएस जैसे सब्जेक्ट्स है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह, यू कैन रेफर टू गेट स्मैशर्स.
So yeah, it is a very popular YouTube channel with more than 2 million subscribers or something. And उसमें हर concept चाहे वो software engineering का concept, so project management, DBMS. So I have referred Gates Masters for these three basically. तो उसमें अच्छे से वो लोग समझाते हैं with real life examples. So this was all about technical skills. Now we'll come to another aspect of communication skills. Now, along with technical skills, the most and foremost important skill for any B.Tech or tech aspirant student is communication skills. Now, communication skills can be of few types: verbal, non-verbal, written, communication in team settings, right? Now, verbal communication, as we all know, बातचीत करना, so verbal communication can be of use during interviews if you are going for interviews in near future for any job or something. So वहां पर communication skills देखते हैं along with knowledge तो ठीक है but communication skills भी देखते हैं. अगर if you are delivering some speeches in your college seminars, discussions or something, वहां पर verbal communications use होते हैं. नाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा कुछ कोर्स देख के या फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख के तो डेवलप नहीं होता. ओवरनाइट कम्युनिकेशन स्किल्स डोंट डेवलप, राइट? उसके लिए यू नीड टू एक्ट इट इन रियल लाइफ. तो उसमें क्लासरूम पार्टिसिपेशन हो गया कि कोई अगर फॉर एग्जांपल देयर अ थिंग कि कैसा होता है ना कि अगर कोई टीचर क्लास में पूछी कोई क्वेश्चन पूछी एंड मेनी स्टूडेंट्स थिंक, मतलब मैं भी ऐसा करती थी एक टाइम पे कि तभी आंसर आता है पर वी डोंट रेज आवर हैंड्स एंड आंसर, ये सोच के कि अरे व्हाट विल पीपल थिंक. द थिंग आई रियलाइज्ड वेरी वेरी लेटर दैट लोगों को डाउन द लाइन 10-20 ईयर्स लोगों को याद नहीं रहने वाला है कि उसने 10-20 साल पहले उठ के क्या बोला था. तो वो इट डजेंट मैटर, राइट? वो मोमेंट के लिए सब देखेंगे हंसेंगे, उसके बाद हार्डली 10 मिनट्स उसके बाद सब भूल जाएंगे. कोई कोई याद नहीं रखने वाला, राइट? तो इट डजेंट मैटर बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करने में हेल्प करता है. सो क्लासरूम पार्टिसिपेशन या फिर हो गया अटेंडिंग सेमिनार्स और टेकिंग पार्ट इन कॉलेज डिस्कशंस डिबेट्स वगैरह, वो सब में यू बिल्ड कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट क्रूशल फैक्टर इन कम्युनिकेशन, राइट? लैंग्वेज आता है पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है. सो ये सब करके रियल लाइफ में इंटरेक्ट करके लोगों से या फिर अ सिंपल वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन योर रूम एंड टॉक. खुद को देख के बात करो. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस. Next is non-verbal. Of course, non-verbal means maintaining eye contact, appropriate hand gestures, body postures. Yeah, if you're in the audience listening to a speaker, you should nod like giving approving the speaker कि मुझे समझ आ रहा है. And if you are talking to some interviewer or something, you should maintain eye contact, which is a sign of confidence. तो वो सब non-verbal communication हुआ. रिटर्न कम्युनिकेशन मोस्टली यूज होता है जो इंजीनियरिंग में टेक्निकल रिपोर्ट्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, जो प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बनाने को बोलते हैं, उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन काम आता है. और या फिर कोई ईमेल फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए कुछ ईमेल भेजना है किसी को या फिर कि ये मेरा रेज्यूमे है वगैरह वगैरह, तो उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन काम आता है. Communication in team settings. Now, communication in team settings, I'll give an example. For example, if you are having a group project consisting of 4 to 5 people, right? And उसमें से किसी एक को टीचर ने बुलाया and she gave the group project some changes कि ये project में कुछ changes करो. But that person is unable to deliver या to let others know कि वो changes क्या है appropriately. तो ऐसे अगर वो चेंजेस बताने में नहीं सक्सेसफुल हुआ तो ग्रुप पूरा प्रोजेक्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा सब में और पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा प्रोजेक्ट में. सो कम्युनिकेशन इन टीम सेटिंग्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग टू एंश्योर coordination and collaboration among with the team, right? The next aspect is critical thinking and problem solving. So, it is said that half of the problem is solved if it is recognized perfectly, right? So, now as engineers, as tech enthusiasts, we are made to bring solutions to problems and solve them in a way that benefits not only us, but everyone around us. Now, there are three basic steps of critical thinking and problem solving skills. First is problem recognition, of course, to recognize the problem. Second is analysis of the problem. Problem exactly क्या है and उसको कैसे solve कर सकते हैं, उसका idea plan बनाना. And the last stage is implementing the plan or implementing and fixing the problem. I'll give an example. For example, if there's a shopping app,
ठीक है, एंड उस पे वेरी फ्यू पीपल, ऐसा नोटिस हुआ कि वेरी फ्यू पीपल आर कमिंग ऑन द शॉपिंग वेबसाइट एंड इट्स नॉट मेकिंग एज मच मनी एज पॉसिबल, या फिर बहुत जल्दी छोड़ के जा रहे हैं लोग वो वेबसाइट से। सो उस पे फिर इन्वेस्टिगेशन होगा कि हाउ द वेबसाइट इज डूइंग एंड कैसे क्यों स्लो हो रही है, एंड अंडरस्टैंडिंग, द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मे बी द वेबसाइट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू शो द प्रोडक्ट्स और दैट इज वाई यूजर्स आर लीविंग, या फिर वो पेजेस लोड नहीं हो रहा। तो वो सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, हो सकता है कि बिग पिक्चर्स हो या फिर बहुत ज्यादा कोड हो, मेसी कोड हो, उसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिक्सिंग द प्रॉब्लम, what steps can be taken to fix the problem? The pictures can be made smaller so they load quickly, या फिर डेटा थोड़ा कम कर सकते हैं, or you could fix the bugs and errors in the code or cleaned up the app's code to make it work better. So this is a subtle example of critical thinking and problem solving skills. Now, as Niharika ma'am mentioned, I am the joint chief organizing officer of IET, which is one committee at our college. So me and my team are responsible for conducting any events held by our committee. So अगर बीच में इवेंट के कुछ डिस्टरबेंस होता है, कुछ मिसहैप होता है, so we are responsible for thinking at that time कि अभी क्या करना है. That is called critical thinking and problem solving, कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए. So that is basically the entire aspect of critical thinking and problem solving skills. The next concept and the most important concept is time management and goal setting, right? So as it is said that time waits for none. And being a B.Tech student, 8 semesters, 40 plus subjects, so बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है लाइफ में कि कब क्या कंप्लीट करे. सो टाइम इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर एनी टेक स्टूडेंट, राइट? So, how to manage time? So, the first step would be prioritization. For example, if I have two assignments due, ठीक है, I have one assignment due at night today at 12 a.m. example, and the other assignment I have due, for example, परसों, ठीक है. So now I have to prioritize कि कौन सा assignment करना ज्यादा important है मेरे लिए, आज का के परसों का, of course आज का, राइट? तो वैसा यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स कि कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के अभी करने के लिए. सो यू कैन प्रायोरिटाइज एंड देन यू कैन प्लान एंड ऑर्गेनाइज दैट प्लान. जो प्रायोरिटाइज किया उसको कैसे एग्जीक्यूट करे, या फिर मेनी ऑफ अस हैव डन दिस कि स्कूल में टाइम टेबल बना देते कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये करेंगे टाइम के हिसाब से, एंड फिर वो मैक्स टू मैक्स 1 वीक फॉलो किया या 2-3 वीक्स फॉलो किया और बाद में छोड़ दिया. तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन अगर रहेगा तो ही टाइम बराबर मैनेज होगा, और टाइम बराबर मैनेज होगा तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट? तो डिसिप्लिन भी लाना जरूरी है. द नेक्स्ट थिंग इज गोल सेटिंग. Now, goal setting में there are many advantages of goal setting. So goal setting में basically you have to define clear objectives. और ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि गोल्स लिखो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 10-15 साल के बाद का गोल लिखो. यू कैन ब्रेक दोस लॉन्ग टर्म गोल्स इनटू शॉर्ट शॉर्ट टर्म गोल्स. एकदम छोटे छोटे गोल्स से यू कैन स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेट अ गोल कि टुमारो I have to wake up at 7 a.m. early to go somewhere. Right. So this is a short term goal which I have set. और goal setting का benefit क्या है कि after you accomplish that goal or after you achieve that goal, you get a sense of accomplishment कि हाँ चलो मैंने ये goal achieve किया. So you should not, you should you should celebrate your achievements. You should reward yourself with something कि yes, I have achieved this. So goals बनाने का भी एक तरीका होता है. So setting, there's a thing which you can see on the screen which is called smart goals. Now smart goals is basically a short form for specific, measurable, actionable, realistic and timely goals. Now what is specific? What do you want to accomplish? Example, as I said, I want to get up tomorrow early at 7 a.m. So that is a specific goal. Now, meaningful. Why is this goal important to you? Because I have to go somewhere tomorrow early. So that is why I have to get up at 7 a.m. So that is the meaningful aspect. Actionable. What steps will you take to achieve it? Now, if I want to get up at 7 a.m. early, the steps I can take is, to sleep early at night or something like that. देन इज रियलिस्टिक. व्हाट इज द एक्शन ओरिएंटेड वर्क? नाउ गोल्स भी ऐसा होना चाहिए कि वो रियलिस्टिक हो. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट कि मुझे कल चांद पे जाना है, दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल, राइट? दैट इज नॉट अचीवेबल, आई नो दैट. तो गोल्स भी ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक हो, जो अचीव किया जा सके. एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज टाइमली. बाय व्हेन डू यू वांट टू अचीव दिस गोल?
For example, if I want to learn a new language, for example, if I want to learn Spanish or Japanese, so I can write down I want to learn Spanish or Japanese by the end of this month, or within 2 months, or within 3 months. So ऐसे ना एक टाइम, अगर टाइम लिमिट दिया तो ऐसा एक प्रेशर बना रहता है, मतलब अच्छा गुड प्रेशर कि चलो वो टाइम पास आ रहा है, तो आई हैव टू कंप्लीट दैट. So that pressure in some way helps you, keeps you motivated, right? And after you have completed your goal, after you have achieved it, तो वो एक sense of motivation भी जो रहता है वो help करता है आगे और अच्छे अच्छे goals achieve करने में. And the last point of this aspect is self care. Now, this self care is a very, very important aspect. Now, people think that self care results in nothing, but ऐसा बहुत लोग बोलते हैं. But to me, self care actually increases your productivity. As it is said, self care is not selfish. You cannot serve from any empty vessel, right? So, इतना स्ट्रेस के बीच में, एज आई सेड, 8 सेमेस्टर्स, 40+ सब्जेक्ट्स, इतना सब स्ट्रेस के बीच में you should take some time out for yourself, and you should do the things that you love to make your mind relaxed. For example, you can pursue your hobbies like singing, dancing, or you can go out and play, you can pursue sports, you can exercise, travel, listen to music, and do whatnot. So for me, self care, as Niharika ma'am said, I am the volunteer for two foundations. Basically, I go and teach students from underprivileged areas. So self care in to me in is in the form of volunteering or teaching. So the smile on the kids faces is my form of self care. So self care can be in many different forms, that is up to you, but don't forget, amidst all this tension and stress, don't forget to take out some time out for yourselves and relax a little bit, right? Okay, so now time management का और एक aspect है. So AI tools, with the एआई जैसे जैसे बढ़ रहा है, सो जो सिंपल सिंपल टास्क है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक अ पीपीटी, तो पीपीटी के पीछे अगर एकदम अच्छा पीपीटी अगर बनाने जाए, देखा जाए तो आराम से 1 और 2 आवर्स जाएगा. पर ऐसा एआई टूल्स भी है जो वो काम विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स कर देगा. तो वो सब एआई टूल्स यहाँ पर मैंने लिस्ट किया है. यू ऑल कैन आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन समवेयर. सो बेसिकली अगर पीपीटी बनाना है तो देयर इज एन एआई टूल कॉल्ड गामा. इट्स गामा डॉट ऐप बेसिकली. So वहां पर जाओगे तो यू कैन एंटर द टाइटल ऑफ योर पीपीटी एंड द पॉइंट्स दैट यू वांट टू कवर इन द पीपीटी, एंड वो अपने आप तुमको एक अच्छा सा पीपीटी बना के दे देगा, एंड यू कैन इवन एडिट दैट एंड डाउनलोड दैट. Next is summarize, and for that is Merlin Chrome extension. Now this Merlin Chrome extension is only available on Google browser. So बाकी Microsoft Edge पे काम नहीं करता, सिर्फ Google पे ये होगा. तो इसमें समराइज इन शॉर्ट क्या मतलब, समराइज नॉट अबाउट समराइजिंग द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स और समथिंग, वो तो चैट जीपीटी पे भी हो जाएगा. बट इफ यू आर वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो, फॉर एग्जांपल एक बड़ा यूट्यूब वीडियो देखना है जो 2-3 घंटे का है, एंड उतना बस तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो ये मर्लिन क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करके व्हाट यू कैन डू, कोई भी यूट्यूब वीडियो चालू करोगे तो बाजू में एक मर्लिन क्रोम का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो this will give you the summary of the entire video in just seconds. So वो points के साथ साथ, and you can even chat with that and ask questions about the video itself. तो ये एक है जो मुझे बहुत हेल्प किया लेक्चर्स वगैरह देखने में स्पेशली. Next is playgroundai.com. This is basically an AI for generating AI images for free. मतलब अगर if you want to generate, for example, कुछ भी imagination, a girl standing in a valley वगैरह वगैरह, so you can enter the text and वैसे उस हिसाब से the AI will generate and give you an image, and you can download that. The next AI is थोड़ा सा comic name है Udly.ai. Now this AI is one of my favorite AI because it helps you practice for interview, speech, presentation. So what does this AI do? मतलब this AI will open a camera in front of you and ask you to speak or ask you to present your speech or presentation or whatever. And as you speak, after you have done speaking, the AI will give you a summary of all the all the things like तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा था, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस कैसा था, एंड कैमरा को कितना देर तुमने देखा, आई कांटेक्ट कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसा था, या फिर तुम कितने बीच में तुमने कितना पॉज लिया, कितना स्पेसेस लिया, वो सब एआई तुम्हें बताएगा, एंड तुम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रामेटिकल एरर्स थे क्या नहीं वगैरह वगैरह, तो वो सब ये इससे होता है. The next is formula.doc.
that is another AI which helps you generate formulas for Excel or SQL. For example, if you're working in SQL or Excel or SQL, and if you forget any formula कि समझ नहीं आ रहा कि ये वाली चीज में कौन सा formula लगा है, तो you can search it up on this AI. And the last but not the least AI is debug code.ai. वो तो पढ़ के ही समझ रहा है कि अगर कोड में कुछ एरर्स आ रहा है, कुछ bugs आ रहे हैं, so you can enter the code in this AI and it will help you to find your bugs. So this was all about time management and goal setting. The hmm, the next aspect is team management and team management and collaboration skills, or teamwork and collaboration skills. Now, team collaboration, there are 3 points basically: team collaboration, leadership, and networking. So, team collaboration is ensuring cooperation or coordination within a team to avoid any misunderstandings that can be achieved with the help of effective communication, like in group projects or in your job sector when you're working. So, of course, you won't be working alone, right? You'll be working in a team. So, कुछ जैसे मैंने इसमें कम्युनिकेशन में एग्जांपल दिया, जो कम्युनिकेशन इन टीम सेटिंग था, वहां पर तो within a team everyone should cooperate with each other, everyone should present their views and ideas, and everyone should respect each other's opinions. So that is basically team collaboration. The next is leadership. Now, if you are a part of any team and if your team is not producing the effective results or is a weak team, so someone should take the lead, right? So you have to, at this time, if no one is taking the lead, it is you who have to stand up and take the lead for your team to bring out the effective results. So usme bhi, that is basically the quality of leadership, to ensure effective collaboration within the team, or to stand up for your team. वो leadership हो गया. The next point is networking. Now, it is said that a good network is equal to your net worth, right? So, I'll give an example. For example, if I know a person working as a project manager at Google, right? So, or matlab, it's not like at the end of the day, of course, skills matter, but that person can guide me कि उसने वो स्टेप कैसे अचीव किया, उसने वो पोजीशन कैसे अचीव किया. सो अभी जो उसको नहीं जानता, उसको ये सब स्किल्स पता नहीं रहेगा, जो इनसाइडर्स बोलते हैं कि वो छोटी छोटी बात जो उसने फॉलो किया वो लेवल तक पहुंचने के लिए. सो इट्स लाइक स्किल्स मैटर ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे, but a good and like-minded network of people can help you grow and learn many new things, and can help you achieve the things that those people have. So that is basically networking. uh, the last and the last point for today is adaptability and flexibility. Of course, the first point is open to change. Now, you should be open to change because this tech field, जैसे बोलते हैं, is a very dynamic field. जैसे बहुत सारी नई नई चीजें आती है रोज रोज. You can't be dependent on one particular thing. For example, अभी AI का ट्रेंड चल रहा है. Everyone is like AI जॉब ले लेगा, जॉब ले लेगा. But I feel वो AI जॉब ले लेगा वाला जो पार्ट है, you think कि it's AI versus humans, but you should think कि it's AI along with humans, right? ऐसा नहीं कि AI जॉब ले लेगा. You should be able to learn and cooperate with AI. You should be able to work together. क्योंकि अगर सिर्फ AI काम करेगा या सिर्फ ह्यूमन काम करेगा तो उसमें इतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आएगा जितना अगर दोनों मिलके करेंगे, राइट? दोनों मिलके अगर करेंगे तो ज्यादा, ऑफ कोर्स, ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएगा. So that is being open to change. Be open to new trends, new technologies. Stay flexible in your approaches. View challenges as learning opportunities, and actively explore diverse aspects of the field. That is being open to change. The last point is continuous learning. Now, as I said, leadership के point में कि if your team is weak, you should stand up and take the leadership for your team, right? So, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि if you are the leader तो सिर्फ मुझे ही आता है, मैं तुम सबका सुनूंगा नहीं, जो बाकी है सिर्फ मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, right? You should be open to learning. You should have the perspective के you should always be open to learn, and you should have the perspective कि बाकी लोग को भी ज्यादा पता हो सकता है मेरे से. सो भले ही तुम एक सीनियर पोजीशन पे हो, हायर पोजीशन पे हो, डजेंट मैटर. यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू learning, and you should always maintain curiosity in yourselves, and you should always seek feedback for improvement. This commitment to continuous learning ensures staying informed about current trends and enhances skills beyond the academic curriculum in B.Tech or any tech field studies.
So that is it for today's webinar. So the conclusion part is, I would say, कि don't rely on bookish knowledge itself or rote learning. Understand the concepts very well. Improve your soft skills along with your programming or hard skills, and keep learning always and stay curious. Over to you, Niharika ma'am. Okay, so there is one question that we have. So Shreyas is asking that could you please explain more about clubs and committees that are there in college? Maybe you can highlight something from your experience, that how did you get involved, and what is the work that you do when it comes to clubs and committees? Okay, so clubs and committees in college is basically a group of like-minded people. Just say I talked about networking. So it's basically a group of like-minded people that come together to achieve a certain goal. For example, there are many different committees. Some committees focus on only computer or programming skills. Some committees focus on public speaking or soft skills. Some clubs or committees focus on, other aspects की बाकी industry exposure या internships दिलाना. So that is basically what a club or committee does in a field. मतलब टेक से अलावा भी नॉन टेक्निकल कमिटीज भी होती है, जैसे अगर हॉबीज परस्यू करना, डांसिंग क्लब, सिंगिंग क्लब, वो सब भी होता है. बट रिलेटेड टू टेक मैं बता रही हूँ कि टेक committees are basically people who strive together or work together or learn together something related to technical. So अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कमेटी है, वी ऑर्गेनाइज सर्टन सेमिनार, सर्टन इवेंट्स, और वी हैव लाइक मुंबई लोकल नेटवर्क. सो वहाँ के बहुत सारे कंपनीज के सीईओज जो है या फिर जो बड़े बड़े पोस्ट पे है, वो आके हमें सेमिनार्स देते हैं. तो वो अपने जर्नी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ये मतलब ये पाथ कैसे चुना, एंड वो आज ये पोजीशन पे कैसे पहुंचे. So that helps us to understand the real world aspects, the industry aspects, क्योंकि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करके तो अपने को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा, राइट? You need network of some people who give you insights on how the real world or the practical world is. So that is basically what a committee or club does. Okay, there is another question. Can you again please tell which courses or channels to refer to? So maybe you could talk about some of the online courses, or something that, or maybe some of the resources that have helped you. You can just go back Yeah, to the same. yeah. Okay, so some courses, you can take a screenshot of this. So this is, first of all, I would suggest NPTEL courses. Now these courses are मतलब जो IIT या IISc ट्रिपल आईटी के जो टीचर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, वो लोग आके ये फोरम पे पढ़ाते हैं. बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से काइंड ऑफ इनिशिएटिव है, एनपीटीएल स्वयं करके एक है. सो पर ये मेरे ख्याल से कोई कोई कॉलेजेस से अफिलिएटेड रहता है. सो यू नीड टू चेक इट आउट वंस. अगर तुम्हारे इससे खुल गया तो वेल एंड गुड, बट यू नीड टू चेक इट आउट वंस. एंड उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक रिलेटेड है, बाकी भी बहुत सारी चीजें है उसमें. एंड अगर उसमें सीखना है सच्ची में, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. बट अगर तुमको सर्टिफिकेशन चाहिए, जैसे आईआईटी या फिर जिस जिस कोर्स से वो इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड है, अगर उसका सर्टिफिकेट चाहिए, सो यू नीड टू गिव एन एग्जाम. ऑफलाइन एग्जाम होता है, सेंटर पे जाके उधर रिटर्न एग्जाम होता है कंप्यूटर पे, तो वो देना पड़ता है. एंड कुछ फीस रहता है, समथिंग 500 और 1000 रुपीज, उतना देना पड़ता है. एंड फिर अगर वो उसमें पास हुए, provided you have completed all the assignments and all the video lectures, and you score about uh, a certain score above in the exam, then तुमको वो जाके सर्टिफिकेट मिलेगा. that is all about NPTEL courses. The second platform is Coursera. ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है ये Coursera क्या होता है. बट उसमें मतलब आधे पेड कोर्सेज है, आधे अनपेड कोर्सेज है. सो अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट यू कैन चेक इट आउट कि तुमको कौन सा कोर्स ज्यादा रिलायबल लगता है. उसमें टेक कोर्सेज और नॉन टेक दोनों टाइप के कोर्सेज है. द नेक्स्ट इज कोडसी. नाउ कोडसी इज मोस्टली अ पेड प्लेटफॉर्म, पर उसमें द कोर्सेज आर क्वाइट अफोर्डेबल. जैसे मैंने लिया तो आई टुक 10 to 11 कोर्सेज इन 300 or 400 रुपीज समथिंग. तो मेरे लिए क्वाइट अफोर्डेबल पड़ा. एंड उसमें देयर आर कोर्सेज ऑफ HTML CSS हो गया, या फिर इस फुल स्टैक डेवलपर का भी है, रोबोटिक्स का है. सो दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म आई फील. उसका मतलब उसमें कोर्सेज जो है वो भी पॉइंट टू पॉइंट है, एंड उसमें लिमिटेड नॉलेज है पर अच्छा नॉलेज है, वैसा है. और गूगल के भी कोर्सेज, वो तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है, डिजिटल सर्टिफिकेशन जो आता है, वो मेरे ख्याल से कोर्सेरा के साथ टाई अप हुआ है. पर एक बार कोई कोई सिर्फ गूगल पे भी अवेलेबल है.
शायद पेड हो गए अनपेड है, यू नीड टू चेक इट आउट। तो वो गूगल का भी हो गया। कमिंग बैक टू यूट्यूब चैनल्स, प्रोग्रामिंग के लिए देर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल्स लाइक कोड विथ हैरी, अपना कॉलेज, या ब्रो कोड हो गया। ये दीज थ्री आर द वंस दैट आई यूजुअली रेफर टू। कोड विथ हैरी, अपना कॉलेज, और कोड ब्रो, सॉरी ब्रो कोड। तो ये तीन चैनल्स है। और एक्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इफ यू वांट टू लर्न डीएसए, या फिर डीएसए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टफ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, सो यू कैन रेफर टू गेट स्मैशर्स। दैट इज अ वेरी नाइस चैनल, तो उसको तुम रेफर कर सकते हो। Okay, one more question. Are Coursera free courses worth it? Can they be added to your resume? So have you done any free courses in Coursera, like for your या knowledge, for your upskilling? कोर्सेरा, या कोर्सेरा में मैंने टेक टेक रिलेटेड तो नहीं किए थे, पर मैंने पब्लिक स्पीकिंग या फिर वैसे सब कोर्सेज किए हैं मैंने। तो या इट इज वर्थ, अच्छा सिखाते हैं वो लोग, एंड यस यू कैन ऐड इट टू योर रेज्यूमे। अगर टेक रेज्यूमे है तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, जो पब्लिक स्पीकिंग जैसे मैंने किया, वो एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालना थोड़ा अच्छा नहीं है। वो पर डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, पर अगर टेक रेज्यूमे है, टेक फील्ड में जाना है, तो एंश्योर कि तुम लोग टेक टेक रिलेटेड ही कर रहे हो। पर अगर बाकी जैसे सॉफ्ट स्किल्स भी है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया वगैरह वगैरह, वो भी तुम लोग कर सकते हो वैसा। Yeah, I guess you could add it to your resume. There's no harm. या But yeah, it would be, of course, better if along with those courses, you also have tech courses that you've done. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। So, yeah, so I think we don't have any more questions. That brings us to the end of this session. I am quickly launching a feedback poll for all the attendees who are still here. Request you to just let us know through the poll that if this session, you found the session helpful, and would you be recommending it to other people. Also, the session will be there on YouTube as well, so that if you want to go back and refer to it, refer to the content, you can do so. I am just posting the link of the YouTube video where where you can sort of access this video later. Um, Okay. So, okay, I there was another question in the Q&A box, but someone has just thanked you for answering their question. Um, so yeah, I think we have a few of the entries in for the poll. So I feel if there are no more entries to be there, though I can just quickly finish the poll. Or if you want to, sort of still keep on answering. I think we have uh, pretty much, a lot of answers. So I'm just ending the poll here. Um, okay. Thank you so much, Ipsita, because it was a very, very well elaborate session. थैंक यू मैम। You were very good with communicating your ideas as well, and I'm also glad to see that many people asked questions as well. So they were engaged and interested, and हम्म। I hope that we were able to answer your questions as well. So yeah, I mean, thank you so much, Ipsita. Thank you so much, and थैंक all यू the मैम, best to थैंक you. यू एवरीवन।